Hello class 9th. Today I am going to start new chapter, that is chapter number 9, economic importance of bacteria and fungi. Okay class, this is for class 9. Okay, economic importance of bacteria and fungi. Now this chapter contains two parts, 9a and 9b. Okay, so now I am going to start with this section 9a. चैप्टर फर्स्ट, इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज 9a, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, एंड नाउ 9th b containing the economic importance of fungi. So now today I am going to teach you economic importance of bacteria. Economic importance of bacteria. Okay, not fungi. Fungi it is in section B, 9th b. Okay, now today's topic is economic importance of bacteria in section 9th A. Economic importance of bacteria. As you know, bacteria are primitive organism. Okay, primitive organism. Okay, consist of single cell, means prokaryote without a true nucleus. They have no chlorophyll. No chlorophyll. And their body is not differentiate into the part like root, stem, leaves and flower. Okay, now bacteria in general study, bacteria are most primitive unicellular, okay, made up of single cell, that is unicellular organism, and each bacterial cell consists of single chromosome. Okay, और क्या contain करता है? Single chromosome. Single chromosome. It is these are the characteristics of bacteria. Okay, single chromosome and means nuclear material, and which is not enclosed in a nuclear membrane. ठीक है, chromosome तो है लेकिन without nuclear membrane. Without nuclear membrane. Nuclear membrane. Okay. Now bacteria so numerous and everywhere, as you know, there are several thousand known species of bacteria which occur in air, water, soil, food stuff, or inside the body of living organism. And in short, practically everywhere in our own body there are hundred and thousand of bacteria in mouth, skin, inside intestine, in the genital tract. Some bacteria occurring in our intestine are beneficial. They synthesize certain vitamins such as vitamin B. Okay, bacteria present in our intestine. इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होता है, नाउ सिंथेसाइज विटामिन बी. ओके, विटामिन बी सिंथेसाइज करता है. सर्टेन बैक्टीरिया आर हाईली इंजूरियस कॉजिंग डिसीजेस, बट देयर आर अदर विच आर हाईली बेनिफिशियल. ओके, साइज varies. Okay, smallest living organism on earth, and average size is 2 micrometer long to 0.5 micrometer thick. Okay, now shape wise our bacteria are usually of 4 types. Okay, shapes के accordingly कितने होते हैं? It is of 4 types. First one, that is cocci. Cocci means spherical in shape. Okay, round हो गए, that is cocci, spherical in shape. Second one, that is bacilli. Bacilli कैसे होते हैं? रॉड शेप्ड के, इस तरह के रॉड शेप बैक्टीरिया होंगे, that is called bacilli or bacillus. And third one, spirilla. Spirilla, spiral in shape. Okay, is like this, spiral in shape. And now fourth one, that is vibrio. Fourth one, vibrio, comma shaped. Okay, comma shaped bacteria. Now according to the shape, there are 4 type of usually are of 4 types. First one, cocci, rod shape. Second, bacilli, broad cocci, round shape. Bacilli, rod shape. Spirillum, spiral or twisted bacteria also called. And vibrio, comma shaped. Okay, many bacteria live single, but some occur in pairs, like diplococci. डिप्लोकोकाई, कोकाई मीन्स राउंड, बट जब दो ऐसे जुड़े होंगे तो नाउ इट इज कॉल्ड डिप्लोकोकाई. डिप्लो मीन्स दो, डिप्लोकोकाई. व्हेन 2 joins together and is called diplococci.
एंड अ लॉन्ग चेन, ठीक है, पूरा एक लॉन्ग चेन बना दिया लाइक दिस, ठीक है, कोकाई ने पूरा एक लॉन्ग चेन बना दिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई, कोकाई मीन्स राउंड शेप भी होंगे, ठीक है, दैट इज कोकाई। अगर यहाँ पे बैसिलाई लिखते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलाई, तो मीन्स स्ट्रेप्टो मीन्स चेन होता है और बैसिलाई में इस तरह से राउंड रॉड लाइक अटैच होते हैं, तो दैट इज स्ट्रेप्टोबैसिलाई। ओके, स्ट्रेप्टोकोकाई लाइक दिस। एंड स्टेफिलो मीन्स क्लस्टर के फॉर्म में होंगे लाइक दिस। ओके, स्टेफिलोकोकाई लाइक दिस ना, क्लस्टर के फॉर्म में ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं, दैट इज स्टेफिलो। ओके, डिप्लोकोकाई व्हेन टू इन शेप, ठीक है, टू जुड़ा हुआ है, पूरा चेन बना रहे हैं, दैट इज स्ट्रेप्टो, और पूरे क्लस्टर के फॉर्म में है तो नाउ स्टेफिलो। ओके, इट कोकाई, अगर कोकाई की जगह पे बैसिलाई होगा तो यहाँ पे रॉड्स होंगे इन द प्लेस ऑफ सर्कल। स्पाइरलाई होंगे तो नाउ इट्स सपोज यहाँ पे स्टेप्टो बैसिलाई, तो मीन्स यहाँ पे सर्कल की जगह पे हम क्या ड्रॉ कर देंगे, रॉड। तो मीन्स अगर डिप्लो मीन्स टू, स्टेप्टो मीन्स चेन एंड स्टेफिलो मीन्स क्लस्टर। ओके, now structure, each individual bacterium is rather a simple cell containing the living organism substance, protoplasm. See structure of bacteria. This is capsule, thick walled. This is thick walled capsule, outer resistance provide करता है, heat, okay, after that glycose यहाँ पे and two flagellus emerges out from here, flagellus. Okay, cell membrane, this is cell membrane, this is cell wall, and this one is plasmid, this one is glycogen granules, this one bacterial chromosome है but without any nuclear membrane, okay, and this one is cytoplasm. Okay, outer one is capsule, inner one is cell wall, this one is cell membrane, this one is chromosome or nuclear material, okay, and this one is plasmid, okay, and or plasmid, and this one is flagellum, okay, and bacterial chromosome, this one is bacterial chromosome, and cytoplasm, this one fluid filled in it, that is cytoplasm. Okay, cytoplasm, cell membrane and bacterial chromosome collectively is called protoplasm. Okay, these three, cell membrane, bacterial chromosome and cytoplasm is collectively called protoplasm. Protoplasm, and this one is glycogen granule, food की तरह स्टोर करता है, glycogen granules, and flagella for locomotion, ठीक है, लोकोमोशन होगा फॉर फ्रॉम दिस फ्लैजिलम, ठीक है, इधर उधर जाने में हेल्प करेगा. दिस इज द बैक्टीरियल
cell.